And that was the biggest, obviously. So that's why I think even it compelled the Prime Minister of our country कि नहीं मुझे इससे बात करना है. उन्होंने क्या बोला आपको? ज़्यादातर कहते हैं बैंड इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एस इट लाइक ए अफसान. Like मैंने 1.5 साल तक I didn't tell my father that I'm going for football training because it was very hard. I knew कि मैं घर में लॉक हो जाऊंगी, nobody will बजे, और मैं शाम को कितना 11-12 बजे घर पहुंचती थी. तो क्या आप अपने कोचेस को बोलते जल्दी करो मेरे को पनवेल नहीं करना है? बिल्कुल नहीं. Take your time, please stop using your phones, please. बाहर जाओ, अपनी बॉडी पे काम करो, फिटनेस. अच्छा ठीक है, आधा घंटा अपनी बॉडी को दे दो, दैट्स इनफ कि आप फिट रह पाओ. Hello guys and welcome back to a brand new very special episode of Sports Backstage, where the guest today is Afshan Ashiq, a name you must have heard in the news for many reasons. The purpose which I had on this podcast was to get to know the story behind her journey, what led her to where she is, what she has done for women's football in Kashmir and in India, what are her goals in the sport for the future, and how she sees India growing, especially women's sports, how she sees that growing in the country. So this was a very special episode for me because I got to know about the journey of a woman who went against all odds and really fought the system, even fought her family, to achieve her dreams. And this is one episode which is very special and very close to my heart, and I'm sure you will like it as well. So presenting to you without any further delay, Afshan Ashiq. So Afshan, it's an absolute pleasure to have you on our show today on this very, very special show, especially for me, because this topic is very close to my heart as well. Growth of women's sports in the country, football as well. And how are you feeling today? To be very honest, feeling good because when you talk to any person who is very much into sports, you feel comfortable and you can speak your heart out, whatever it is, like whatever you feel in sports, what change you want to do in sports. So obviously I'm feeling good and exciting. Yeah, I mean, it was very interesting that you actually took the time to reply, and she has a flight to catch after this, and still, she's micromanaging and making time for sports. So that really goes to show that, how passionate she is about sports. Yeah. And thank you so much once again for being here. My pleasure. So before we get into this, I feel as an athlete, a lot of the time we are, thinking our mind is always in some place or the other regarding our sport. Yeah. So with so much of travel and so many shifts in your lifestyle recently, where's your mind nowadays? Like what's going on in your mind nowadays? Nowadays I just want to recover from my injuries. Oh, okay. Because one league is over. Like from last 6 months we are playing leagues again and over and over again, and we are not getting time to recover our body and injuries. So my mind right now is to get fit again. Like I'm not that unfit, but little injuries are there, and I want to recover. Wear and tear. Yeah, we have to. And then obviously when you come to sports, so there are a lot of things that we go through, and lots of ups and downs we face, and you have to be keep your mind stable. Not to keep thinking about negative things, because in sports you will get a lot of negative things, and if you keep thinking about those negative things you won't get ahead. And my mind is always like, if there is a negative thing, I will still find a positive thing in that, and that keeps me going up. If there is negative thing, there must be a positive thing also. So my mind is always positive, and I always think positive about it. So that comes with the sport, right? I think that's what sports teaches you, how to deal with adversity. Exactly. कि मतलब बुरे वक्त में भी अच्छा सोच के निकालना. Exactly. And especially when you're saying about negativity coming in the mind, I feel like especially during an injury, it's very easy, क्योंकि जब आप fit रहते हो, आप तो ground पे रहते हो, फालतू चीजें सोचने का टाइम नहीं मिलता. But जब आप injured रहते हो तो लगता है oh my god, what happened to my life? Am I going to be perfect again or not? Because sports में ऐसी छोटी छोटी injuries भी अगर हम उन पे ध्यान ना दें, वो इतनी बड़ी हो जाती है. Like I have a lot of students. Recently one of my student got ACL.
And I asked her how you didn't realize कि तुम्हारा इतना ज़्यादा बढ़ गया. Ignore कर देते. Yeah, so they ignore. It's like you are very young. If you won't take care of these injuries right now, your future is gone and you won't be able to play further. And the main thing is they realize they have got injured, but still they keep pushing to the limit. No, I want to do it. No, just keep, like, relax your body, give some time to your body so that your muscles, your, like, tears and all will get recover. But today's young generation, they just want to play. But for that you have to keep your body fit. I hope the young generation will think about their body and their fitness, because without fitness, without your fit body, you can't play sports, right? You have to be fit for sports. So I always suggest my players, if like anything happens in their life, because I'm involved in their life personally and professionally also, because sometimes if a person is professionally good in sports, but in this personal life there are some things like which are bothering them and they're affecting their professional life. Mentally. Exactly. And my main thing is I want to get to know your personal life. If your personal life is good, your professional life will be automatically good. And I keep counseling them. Don't do this, do this. This is good for you, this is not good for you. I am making a path for you. Just go on that path. Exactly. Because back in Kashmir, being a first female footballer, there was no girl. And when my coach came to me and said, I was into cricket before. Achha. Yeah, I was a cricketer before. So I gave a lot of trials in Kashmir, but the thing was... Wait, so in cricket, what did you do? Bowling? I think you were a bowler? No. Batsman? Yeah. Oh. So gave a lot of trials, but I thought that there was a time where I realized that sports is not for me. And I quit from sports, cricket. And my dad was very supportive when I was a cricketer. Achha. And इसमें तो scope है. इसमें scope है, go ahead. And then there was 1-2 year break. I didn't play any sport. So I was sitting on my, it was a college. I was in college and I was sitting on my, that was a football ground actually, but never used for football. Yeah. So girls used to come and sit on the ground and do whatever they like. I was sitting and reading. There was one coach, he was 73 years old that time. He came to me. Are you an athlete? I was like, no. He's like, no, but your body looks like you're an athlete. I was like, no, sorry, I'm not. Why don't you try football? I was like, are you serious? I seriously laughed on him. Are you serious? You want me to play football? There is no football girl. See, everybody wants to everybody wants others to take the initiative for them. Why can't you? I was like, no, I don't want to become the one, because I know my father, he will never agree. Because first thing, whenever you take any sport, first things come to your mind, whether my family will support me or no. And I knew my father will never support me for football. And I was like, okay, fine, let's give a try. Because I was very much into sports. I used to play volleyball, I used to play kho-kho, I played every game. You enjoyed being outdoors and active. And then my sports director asked me, if you want to go ahead in sports, you have to choose one sport. And that will take you ahead. And that this coach met me and he said, become a footballer. I was like, okay, let's give a try. And when I first touched the ball, that was the day when I was like, no, I can't live without this. Achha. Yeah. You liked it so much. I loved it. So let's go back to that experience. So the first time you encountered was it a game of football? Was it training? Coaching? No, it was just training. Training. So मजा आया. हाँ, वो भी लड़कों के साथ, वो मुझे यहाँ मार रहे वहाँ मार रहे, इसलिए कोई बात नहीं बच्चा, मैं भी प्रो बनूंगी तो मैं भी वैसे ही मारूंगी. तो पहले दिन कंट्रोल हो रहा था बॉल? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो ये हार्ड होता है, मतलब शुरू में बॉल कंट्रोल करना. मतलब टच भी लेना हार्ड होता है. यू हैव नो आइडिया कि किस पार्ट ऑफ द फुट यू हैव टू किक इट. अंगूठे से मारते हैं. एग्जैक्टली. तो माय कोच वाज लाइक, तू कुछ भी कर ले, बट never use your toe. I was like, okay. And literally, I appreciate my coach a lot because उसकी toughness की वजह से मैं वो सीख पाई. Because whenever literally he used to spit
मेमुना वाले प्रोफेसर थे क्या? Yeah. Like, दफा हो जाए यहाँ से. I was like, sir, I will do it. Please give me a chance. Let me try. No, you can't do it. Go ahead. I was like, please, at least give me. And literally वो मुझे निकाल देते थे और मैं दूसरे दिन फिर से आती थी टाइम पे, खड़ी रहती थी. आधा घंटा वो मुझे वेट कराते थे. मैं वेट करती थी, बोलते नहीं लूंगा मैं मतलब इधर ही वेट करूंगी, आपको लेना पड़ेगा. एंड देन यू यूज्ड टू रियलाइज नो दिस गर्ल इज क्रेजी नाउ. हाँ ठीक है, ले लेते हैं इसको. एंड देन लाइक मैंने 1 साल तक 1.5 साल तक आई डिडंट टेल माय फादर दैट आई एम गोइंग फॉर फुटबॉल ट्रेनिंग बिकॉज इट वाज वेरी हार्ड. आई न्यू कि मैं घर में लॉक हो जाऊंगी, नोबडी विल अलाउ मी टू गो आउट. एंड जब मैंने डैड को ये कन्फ्रंट किया बिकॉज इट वाज वेरी necessary to tell my family that what I am doing right now. I was a commerce student and I used to go for tuitions, but my tuitions and football training was clashing. Timing of and my dad used to drop me to the tuition. Okay? और वो वेट करते थे जब तक मैं अंदर नहीं जाती थी. एंड मैं वेट करती थी, अंदर जाती थी, वेट करती थी कि गाड़ी की आवाज कब आएगी कि पापा चले गए और मैं वापस फट से निकल के ग्राउंड पे जाती थी. एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस एंड स्ट्रगल फॉर मी बिकॉज अगर वो स्ट्रगल मुझे नहीं मिलता, अगर मेरे डैड मुझे वो स्ट्रगल नहीं करवाते फुटबॉल के लिए, then I wouldn't have been so much exactly grateful to football. And I thankful to them कि उन्होंने मुझे इतना स्ट्रगल कराया. मैं चाहती हूँ कि मुझे और स्ट्रगल मिले आगे ताकि मैं उस लेवल पे जब पहुंचूं तो मुझे रियलाइज हो कि मैं कितने हार्डशिप से होकर आई हूँ. डेफिनेटली. आई थिंक शुरू में आपने जो एक चीज़ मेंशन की, जो हम इंजरीज की जो बात कर रहे थे, इंडिया में जो कल्चर है कि थोड़ी बहुत चोट लगती है और अगर बंदा उसको या बंदी उसको मतलब हील करने के लिए रेस्ट लेता है तो अरे ये तो पड़ा रहे, जब देखो इंजर्ड रहता है. तो नॉलेज नहीं है कि मतलब कब उसे इग्नोर कर सकते हैं, कब उसे सीरियस लेना है. सो हाउ डू यू थिंक लाइक दिस फॉर एवरीवन वाचिंग, दैट हाउ डू यू थिंक दे शुड अप्रोच दिस इशू व्हेन you know we have a sports physiotherapist, right? So I personally feel every sports person should have their own physiotherapist. देखो अगर रियलिस्टिकली बात करें तो एक लेवल के बाद जाके ये सब एक्सेसिबल हो जाता है, नहीं तो अफोर्डेबल भी उतना सबके लिए नहीं रहता. आजकल जो फिजियोथेरेपिस्ट है ना, दे आर नॉट दैट मतलब अनरीचेबल नहीं है. अच्छा. दे आर वेरी सपोर्टिव. इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू पे और इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू गिव एनीथिंग, दे स्टिल हेल्प देम. सो इट्स when it comes to sports now, everybody comes together and supports it. Community. Exactly. And obviously when you said कि हम उतना ध्यान नहीं देते अपनी इंजरीज पे, like I have my knee injury right now, and मुझे लगता है मेरी पूरी लाइफ में मुझे पहली बार इंजरी हुई है इतने सारे सालों में. But अभी when my team needs me, I have to be there. Correct. Right? Whether I have an injury or no, because अभी हमने एक लीग खेला, I was the only goalkeeper in my team because you were the only goalkeeper. तो आप अगर गलती से इंजर्ड हुए तो खत्म. एंड मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इंजर्ड ना हूँ, but at the end I got it. But जब आप प्रिवेंट करते हो ज्यादा कॉन्शियसली तो ज्यादा इंजर्ड हो क्योंकि मसल स्टिफ हो जाते हैं, फिर आप नेचुरल रिएक्ट नहीं करते हो. दिस इज समथिंग वी स्पोकन अबाउट ऑन अदर शोज कि लाइक बेस्ट कब परफॉर्म करता है एथलीट जब यहाँ से एकदम फ्री रहता है कि नो आई एम फिट एंड आई कैन प्ले एनीवेयर. बट वो भी हम बोलते हैं कि फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल, बट नो, व्हेन यू आर मेंटली फिट, योर फिजिकल फिटनेस एंड मेंटली फिटनेस इज रियली इंपॉर्टेंट. इफ बोथ आर देयर देन यू आर फिट. If you have a physical fitness but you have not a mentally fit, that doesn't work because when you talk about injuries, you have an injury but your mindset is like, now I'm not gonna play. You're gone. You won't be able to recover from that injury. So you have to be strong from your mind that okay, fine, it's an injury, I have to recover, I have to rest, I have to do the things which I need to do. Like firstly, whenever injury happens, the first thing is icing. It's the best thing to do for any player or any sports person. Because वो एक पहली चीज होती है जो हर एक अफोर्ड कर सकता है. Anybody can afford. डैमेज भी कम कर देता है. Exactly. And it's not harmful भी नहीं है, like you said. It's just ice, you have to put it. If you feel like it's recovering, then you're going on a right direction, right? If not, then you have to contact someone like a physiotherapist so that he can guide you properly what exercise you have to do, what you can do, like how to prevent this injury. So obviously for that you have to be both
both ways fit, mentally and physically. Yeah. And athletes should also, do their own research as well. कि Exactly. छोटी मोटी injuries जो होते रहते हैं उनसे how they should be dealt with. And for that you should contact your coaches, the people who guide you, or just YouTube online. There's so much of resources. Yeah, nowadays. exactly. YouTube give you so much of resources about sports, about anything. So, people use social media things for some other yeah, exactly. You can use them on a very good note. You can learn a lot of things from that. You can teach a lot of things from that. So yeah, that is a good point, I can say. Thank you. So एक दूसरी चीज जो मुझे I found very interesting was when you were telling me the story about how your father used to drop you for coaching and आप wait करते थे कि when he will leave, then you will I'll go back to my ground. And all these struggles have really, what do you say, defined the person that you've become, and the success that you have achieved till date, the first woman footballer out of Jammu and Kashmir, which is a big deal. Big deal, yes. And it also led to, you having a conversation with the Prime Minister of our country, Mr. Narendra Modi. Thank you so much. And how was that like? That one moment changed my whole scenario in family. Right. Because till then my family was not accepting my game. So when I came to Bombay, I actually ran away from my home because I tried to convince my father that there is a trial, I want to go and I want to see myself where I stand. Because in Kashmir there was no competition, no women's football. So I wanted to give a try to myself where I'm standing in women's. And my father, he was like, no means no. And I was like, okay, fine, then I have only one option. I didn't say because I knew if I will, I'll tell my father that I'm gonna run away now, that he's gonna keep eye on me all the time, what I do. But when I got out from Kashmir, I realized that people outside Kashmir are really good. I'm not telling Kashmir is not good. People are very hospitable. A bit different. Yeah, like they help you in every way. I have met a lot of good people in my life. When you are good, I think you will get attract to good people only. And when you talk about like my father and that PM talk, oh my God! When I told my father first time that I got a call and what was the call? Could you tell us about the call? Oh my God! It was a call from my sports council. Okay. And they called me, Afshan, there is a Fit India anniversary and you are being invited by PM Modi, you have to talk. I was like, are you serious? No, you must be kidding to me. I was like, you were like, seriously? Prank call. Obviously, I was like, sir, you are kidding with me, I know. Like, see, he was like, Afshan, you can't say no because they want to talk to you only from football. Achha. I was like, and that was a big thing for me because I was representing the whole football community. Yeah. Like there was Captain Cool, Virat Kohli, and the thing was he was representing the whole cricket, and I was it was a big achievement for me that there are a lot of good players than me in India, like Aditi, like Sunil Chhetri. They could have easily asked for them, but they chose me, and thanks to them that I could make my father understand that no, I'm achieving something in my life, because my father didn't talk to me for 4 years, and there was no contact between my father and me. I used to talk to my mom all the time, but not father, because he was like, you have chose your life, now go ahead, I don't want you to be in touch with me. And when I went back in COVID, it was COVID time, and I didn't want to go back, and my father was like, no, now it's not good to stay there because you have to come here. I was like, okay, fine. Then I went, and then this happened. My brother, my father, they never accepted my football. And after this event, my life changed. My father used to come and say, are you fine? You're not injured? Taking proper rest. I was Practice figure नहीं जा रही हो? My brother, seriously, my brother, मैं सोई रहती थी क्योंकि कश्मीर में सुबह मॉर्निंग में ट्रेनिंग नहीं होती थी, इवनिंग ट्रेनिंग होती थी क्योंकि बहुत ठंड होती थी. Temperature. And my brother used to come to me in the morning, bro, not going for the practice. I was like, तबीयत ठीक है? Are you fine? How suddenly you are changing your behavior? Don't change. I don't like it. Please be the same. मुझे वही feel आना चाहिए. He's like, no, you are doing well. I'm proud of you. I was like, oh my God.
from last 5 years, जो तुम लोगों कान ने तरस गए सुनने के लिए। literally तुम लोगों ने मुझे जो दर्द दिया है, like my brother, when your family is with you, doesn't matter कि कोई है नहीं है, but when your family is not with you, It's a big support. yeah, obviously, You can take on the world. You feel like it. and obviously when I said स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड व्हेन यू हैव योर फैमिली कि हाँ ठीक है, आई कैन टॉक माई हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली, बट वो मेरे पास नहीं था. एंड व्हेन आई केम टू बॉम्बे, आई वाज लाइक कि आई एम द बेस्ट. मेरा एक क्रेज था, आई एम द बेस्ट. And my coach, when I came and he gave me first game, obviously I was nervous. It was my first professional game, and I didn't want to lose, but yeah, I made a mistake. I conceded 2-3 goals, and he changed me on the first half. Sure. It was the biggest fall for me, because never been on Reality bench. check. Yeah, that was a reality check for me, and he made me sit on bench for 1.5 years. 1.5 years on the bench. In Bombay. ये तो वो है कोच कबीर खान वो. He is exactly the same, but he's the best coach, I can say. चक दे वाला. Yeah, he's the best coach. What's his name? Nirvan Shah. He's the coach of PIFA, I guess you know. Yeah. So, and I was like, sir, I used to go to sir, please give me one chance. I'll prove myself. He's like, no. No. You have to get the chance. Earn it. Earn it. I was like, okay, fine. And then there was no goalkeeping training specifically, because in Kashmir I used to do proper goalkeeping training with my coach, because वहाँ ना मैंने हमेशा लड़कों के साथ खेला था. मैंने कभी लड़कियों का टीम नहीं देखा था, मैंने कभी लड़कियों के साथ नहीं खेला था. एंड यहाँ पे आके द थिंग टोटली चेंज कि लड़कियों का गेम अलग होता है, लड़कों का गेम मतलब पेस अलग होती है, लाइक माइंड अलग होता है कैसे खेलना है. एंड मैं वो जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाई थी लड़कियों के साथ, एंड ना कम्युनिकेशन हो रहा था इतना, क्योंकि मैंने 3 गोल कम्युनिकेशन की वजह से लिखा है. आई स्टिल रिमेम्बर. So when you say communication, was that like a language barrier or just a game understanding? When you are new to your team and people didn't get connected to you properly, I was trying my best, but the people were from Kolkata, because the team always gets mixed player, and most of the players from Kolkata. And I was trying to convince them what I want from them, but we were not on the same page. In football, in sports, there are a lot of things we face, there are a lot of things we see, and then we realize, no, we don't want to go in that zone, because when there are 5 people or 6 people from a same state, this is my personal experience, same state, they want those 5 players to be in the team. साथ में आगे बढ़े. And there were 5 players from Kolkata, and one was goalkeeper, and I was the first goalkeeper, and they wanted their keeper. अच्छा. I was like, man, why with me? At least let me show my talent. Let me just get my chance to prove my coach. And then there was my coach's son. I really, really thankful to him when my coach was not agreeing and he was not having that confidence on me that I can play. And then he came in. He said to my coach, I'll train Afshan. And he's like, okay, take her as you like. And then the change I have feel in my style, I felt it was really good. And he used to fight for me with his own dad that why don't you give her chance? She needs it. Yeah. And I'm like, okay, I'll give. If she won't prove me wrong, then what? Okay, I'll never talk to isko chance do. अच्छा. And he came to me. I talked to my dad. You have to get this. I was like, not for you, for myself, for this whole team, I have to get this. And I played damn well that day. And my coach came to me. No, I must say, you are doing well, and I'll give you more chance in future. I was like, okay, it doesn't matter if you give me 1 game or 2 game or even a 1 half. I'll prove myself in that time. I'm the best or not the best. See, I'm not the best, but yeah, in life we have to keep learning. Keep growing. But the thing is, when you are at that point now, you have to be perfect in that role. And
He supported me. He gave me a lot of training. There were a lot of people. You know, जब वो टाइम था ना, जो 1.5 साल मैंने बेंच पे बिताया था, एक नहीं, मैं 3 जगह ट्रेनिंग करने जाती थी. एक तो मैं अपने कोच से ट्रेनिंग In करती one थी. day. One day you trained one day at three places. फिर मैं जाती थी कोलाबा. देयर वाज अ बैक गार्डन. वहाँ पे एक कोच थे, स्वामी सर. वो कोचिंग कराते थे, उनके साथ कोचिंग करती थी. एंड उसके बाद, उनकी कोचिंग के बाद, देयर यूज्ड टू कम अ गोलकीपर कोच. उसका नाम था हर्षद नायर. तो वो ट्रेन कराते थे. तो आई यूज्ड टू ट्रेन विद देम आल्सो. देन एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू स्टे इन पनवेल. एंड मैं सुबह निकलती थी 8 बजे और मैं शाम को कितना 11-12 बजे घर पहुंचती तो थी. क्या आप अपने कोचेस को बोलते जल्दी करो, मेरे को पनवेल निकलना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. और वो भी ऐसे थे कि अफशान, you have to give your full time here. I was like, okay, fine, no worries, you carry on. I'm here because मैं मुंबई आई थी फुटबॉल के लिए, अपना इम्प्रूव करने के लिए. एंड अगर मैं वो यहाँ पे आके भी नहीं करती थी, दैट वाज नो यूज. एग्जैक्टली. एंड नो, जब मैं भाग के आई थी यहाँ पे, देन माय फादर कॉल्ड मी, वेयर आर यू, बिकॉज ही डिडंट नो. एंड उस दिन ईद थी कि अरे बाप रे, स्पेशल डे था, सब एक साथ हम ब्रेकफास्ट करते. एंड ही वाज लाइक, कम डाउन, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर यू, ब्रेकफास्ट करके निकलना है. आई वाज लाइक, पापा. Like, what? Come down fast. I'm like, Papa, I'm in Mumbai. Stop kidding me. Come down. Like, Papa, go ahead, go in my room and see. Cupboard is empty. He went and like, are you crazy? He started yelling at me. I was like, कोई बात नहीं. Give me some time. I'll take my time. If not, this is not happening, I'll come back. Then I asked my dad to come over after settling things in here. And when he came here, I was training in back garden. And there was all boys and girls mixed playing. And my father saw me playing for the first time. अच्छा. Literally, he cried because... How was the pressure on you at that time? I was like, my father, I don't have to do any mistake. Then he was like, you don't play well. Why are you doing so much of struggle for this game? I swear, when dads come to the games... Oh my God. This is... We both need some water. Yeah. And when he saw me playing, पूरा बारिश थी. लाइक दिस मॉनसून सीजन वाज देयर. और वो जो ग्राउंड था, वो पूरा मड का ग्राउंड था. एंड मेरे कीचड़ यहाँ मुंह में जा रही है. एंड माय फादर, और मुझे वो था कि भाई मुझे करना है वो चीज. मुझे आज एक भी कंसीड नहीं कर रहा है बिकॉज माय फादर इज स्टैंडिंग देयर एंड वाचिंग. एंड व्हेन आई फिनिश माय गेम, माय फादर केम टू मी एंड आई वाज फुली कवर्ड विद मड एंड ही हग्ड मी एंड क्राइड. I didn't know you play so well. I was like, see, I was not mad talking about it all the time. Please give me a chance. Please give me a chance. Okay, fine. Then, you know, jab he saw me playing, then he was okay. Then people kept talking. ना, तो वो mindset हमेशा change होता रहता था डैड का कि नहीं, शायद लोग सही कह रहे हैं, नहीं जाने देना चाहिए था मुझे इसे. बट फिर जब मैं कुछ बोलती थी, लाइक हाँ सही बोल रही हो तुम भी. हाँ. तो मैं हमेशा मेरे डैड को बोलती थी कि आई डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल टॉक. In Kashmir, तो people talk a lot. When I started my football, I used to wear not shorts, track pants and all. People used to criticize me. People used to taunt me while walking and all. Even though ground में भी जाते थे, कुछ लड़के ऐसे होते थे जो टीज करते थे, टॉन्ट करते थे कि लड़कियों का काम ये नहीं होता है, गो बैक होम एंड डू योर स्टफ. बट मेरा ये था कि ये जो लड़के आज मुझे बोलते हैं ना ऐसी चीज़ें, कल यही मेरी इंस्पिरेशन लेने चाहिए कि हाँ यार, इस लड़की ने कुछ तो किया. एंड टुडे दे टेक्स्ट मी, इट्स लाइक वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग सो गुड. कश्मीर की शान. हाँ, एग्जैक्टली. राइट. कश्मीर की शान अफशान, मैं ये यूज करूंगी. आई विल यूज इट. रॉयल्टी फ्री. या. तो दैट वाज द थिंग कि जब वो चीज होती थी ना मेरी लाइफ में, मैं ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी कि कहीं से तो कुछ सपोर्ट मिले मुझे, कि लोग बोले. एंड व्हेन आई स्टार्टेड फुटबॉल, माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट एंड ही क्लियरली टोल्ड मी, बिकॉज आई वाज द पैम्पर्ड गर्ल ऑफ माय डैड. वो हमेशा मुझे, मतलब हम 3 भाई बहन है, लाइक सिबलिंग्स है. एंड किसी को इतना प्यार नहीं मिलता था डैड से जितना मुझे मिलता था. एंड एवरीबडी वाज लाइक कि यार इसको सब कुछ मिलता है. मतलब कश्मीर में लड़कियां Are you the eldest? Yeah, no, I'm the middle one. You're the middle one. Yeah, my brother is eldest and younger sister. And कश्मीर में मुझे लगता है मेरी फैमिली में मैं पहली लड़की हूँ जो बाहर आई है, जिसने इतना सब कुछ किया है.
एंड मेरे बाद अब जितनी भी हमारी गर्ल्स की जनरेशन है, दे आर डूइंग व्हाट दे आर लविंग, एंड उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है. बट व्हेन इट कम टू मी, nobody supported me in Kashmir. And I was okay because मुझे लगता था कि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनके सपोर्ट की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ने वाली थी, मेरी मेहनत की वजह से मैं आगे बढ़ने वाली थी. बट वो एक चीज़ होती है ना, व्हेन पीपल कीप टॉकिंग एंड कीप टॉन्टिंग अबाउट यू, तो ऑब्वियसली दैट डेफिनेटली अफेक्ट्स योर माइंड. बट मेरा क्लियर था बहुत पहले से कि let people talk. If people are talking about you, that means you're doing something. तो I like, oh please talk, keep talking. But वो ना जैसे बोलते कि haters बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा हैं, and I take it with a proud. Please be my hater, because जब वो haters मुझे लगता है ना, yeah this is my hater, मैं और push करती हूँ खुद को कि I have to prove them more wrong. कि no, this girl can do much better. And when it come to my family, now माशाल्लाह my whole family, like पूरी जितनी भी मेरे generations है आज तक के, everybody is proud and they are supporting now. You know, when you don't have anyone, you just need an emotional support, and that emotional support I always get it from one of my friend in Bombay. So when I came to Bombay, I became best friend with the best player in Bombay, who was the best player from Bombay. And I was like, when I saw her first playing, her name is Deepika Masurkar. When I saw her playing, I was like, I asked my ma'am, who is she? She was like, she's the best defender of Maharashtra. I was like, ma'am, she plays damn well. क्योंकि मैंने लड़कियों को ऐसा खेलते ही नहीं देखा था कभी पे. And I was like, ma'am, I'm her big fan. And she was like, yeah, she's a damn good girl. You should be in touch with her. क्योंकि वो जो मुझे मुंबई आके जो मुझे क्लब से सपोर्ट मिला, जो मेरी सीओ से सपोर्ट मिला, जो मेरे कोच से, टीममेट्स, फ्रेंड्स से सपोर्ट मिला, दैट वाज अनबिलीवेबल. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि अभी तक मेरा क्लब अभी भी मुझे सपोर्ट करता है, नो मैटर व्हाट. इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम राइट, दे सपोर्ट मी, एंड आई लव दैट पार्ट ऑफ माई लाइक मेरे मैम का, मेरे कोच का. मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है. दे डोंट लीव देयर प्लेयर्स अलोन. जो एक बेस्ट चीज होती है प्लेयर के लिए कि नो, द टीम इज विद देम. उनके जो टीम के कोच है, जितनी भी मैनेजमेंट है, दे वांट यू टू गो अहेड, और वो तुमको पुश करते रहते हैं. एंड माई मैंने, मुझे लगता है इतने 7-8 सालों में हार्डली 1 या 2 बार अपने कोच से प्रेज सुना होगा अपने लिए. अदरवाइज ही ऑलवेज कीप मी लाइक, दिस वाज अ गेम, नो आई डिडंट लाइक इट, सॉरी, change the goalkeeper. And I was like, this is good, no? Yeah. ऐसा coaching is better. Like आजकल कम हो गया है. Exactly, you know. आजकल सब झूठी तारीफें कर करके ना बच्चों को चढ़ा रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कि हाँ ये वो ऐसा चीज है. आजकल बच्चे भी थोड़े, देखो, बुरा मत मान, सॉफ्ट हो गए. हाँ, exactly. वो हैंडल नहीं कर पाते उतना. जब मैंने अपना कश्मीर में क्लब स्टार्ट किया था, so I started an academy there for girls, and I collected 150 girls. Wow. And it was very hard. How did you do that? Like, it was very hard. 150 is a huge, even 50 is a huge number, especially like कश्मीर में जहाँ पे फुटबॉल का there was no idea of football. गर्ल्स छोड़ो, आदमी लोग भी शायद कम ही खेलते हैं. नहीं, कश्मीर में लड़कों उतना है क्या, जितना मुंबई और दिल्ली में जितना स्टैंडर्ड है उधर? Okay, ठीक है, then I start. But you know, they don't get an opportunity. They don't give a good platform कि वो अपना talent को showcase करे. You know, देखो जैसे हमारे कश्मीर क्रिकेट में आप देख लो ना, क्रिकेट इतना बड़ा स्पोर्ट है, अब जाके 1-2 प्लेयर आते हैं. स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में कुछ नहीं है. फुटबॉल ज्यादा है. फुटबॉल का क्रेज वहाँ पे ज्यादा है. फैन फॉलोइंग फॉर फुटबॉल इज लाइक, इफ यू गो फॉर अ क्रिकेट मैच, द स्टेडियम विल बी एम्प्टी. अच्छा. If you go for a football match, you won't get a chance to get in. How is this happening? Like, कश्मीर में बहुत टाइम पहले से ही फुटबॉल बहुत क्रेजी है. मतलब मतलब जब आप जाओगे ना, लिटरली आई वेंट फॉर अ फुटबॉल मैच इन कश्मीर, एंड मैंने एक इतनी ओल्ड लेडी को देखा वहाँ पे फुटबॉल मैच देखते हुए. आई वाज लाइक, व्हाट? आई वेंट टू दैट लेडी, यू लाइक फुटबॉल आंटी? यू लाइक, बेटा मुझे पसंद है, रोनाल्डो मेरा फेवरेट प्लेयर है. आई वाज लाइक, क्या सीरियसली? आई लिटरली मतलब मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हो कि वो एक इतना प्राउड मोमेंट था ना मेरे लिए, कि इतना अच्छा मोमेंट था कि
नहीं मतलब कि कश्मीर में खाली मेंस नहीं है जो क्रेजी है फुटबॉल के लिए अभी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू जनरेशन, आई एम टॉकिंग द ओल्ड वंस. दे आल्सो वॉच, दे आल्सो फॉलोड. This is new information for me. I'm telling you, I've witnessed all these things. And when I was talking about my academy. Starting में I got letters from association. Okay. कि I want letters to the schools, to the college, to the higher secondaries, where I can go and talk to the girls. बात करके आपको पता चलता है किस बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है और किसको नहीं. एंड दैट वाज माय मेन मोटिव टू टॉक टू द गर्ल्स कि उनकी लाइफ में उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में, एंड आई विल हेल्प देम. I was not going for only football. It was just about sports. कि कोई भी लड़की है जिसको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है स्पोर्ट्स के लिए, I used to talk to their family. मैं उनको खुद की एग्जाम्पल देती थी. मतलब नो डाउट मेरे फैमिली ने पहले सपोर्ट नहीं किया, बट नाउ दे आर सपोर्टिंग मी. एंड आई वांट यू कि आप अपनी लड़की को आगे बढ़ाओ. एंड द थिंग इज, जब आप अपनी बेटी पे भरोसा करोगे तभी आपकी बेटी आप पे भरोसा करके कुछ भी बोल सकती है. आपको खाली आज का नहीं देखना, आपको अपनी बेटी की पूरी जर्नी को देखना है कि उसकी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्या वो अप्स एंड डाउन्स आपके साथ शेयर कर पाएंगी. मुझे ऐसा फील होता है मैं अपनी लाइफ का हर एक चीज अपने मॉम और डैड के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो एडवाइस आपको आपके पेरेंट्स दे सकते हैं वैसी एडवाइस आपको कोई नहीं दे सकता है. एंड वो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे. नो डाउट कि वो आप पे कभी हार्श भी होंगे, बट वो हार्शनेस आपके अच्छे के लिए होती है, बेटरमेंट के लिए होती है. क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन है, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करते थे फुटबॉल में. एंड आई वॉज टोटली डिपेंड ऑन माई फादर, क्योंकि फाइनेंशियली आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग. एंड व्हेन आई टॉक टू माई फादर अबाउट फुटबॉल, ही वॉज क्लियर, नाउ यू आर फाइनेंशियली गॉन, आई विल नॉट सपोर्ट यू. माई फर्स्ट फुटबॉल शूज वर गिफ्टेड बाय माई फ्रेंड. अच्छा. सो इट वॉज लाइक दैट वे कि मुझे पता था कि अगर लड़कियों को फैमिली से वो सपोर्ट हट जाता है तो लड़कियों के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है. एंड जब मैं स्कूल्स में गई, आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन गोइंग टू स्कूल्स, कॉलेज, हायर सेकेंडरीज. लड़कियों से बात करना, उनके एक्सपीरियंस, उनकी चीजें जानना कि व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ. Sorry to interrupt, but now I think I'm understanding why they chose you to represent football. Because नहीं, सीरियसली अगर सोचा जाए कि बाकी जो नाम आपने बताए थे फुटबॉलर्स के कि उनको भी ले सकते थे, पर उन्होंने मतलब स्पोर्ट में अच्छा अचीव किया है. पर आपने क्या किया कश्मीर जैसे जगह में लड़कियों के लिए, लाइक हाउ डू यू से, यू गॉन अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स. Exactly. And especially sports and Kashmir, it's becoming a new Kashmir now. It's developing so much now. At least even we are getting to know about चल क्या रहा है उधर. पहले a lot है ना, काफी changes हो रहे हैं वहाँ पे भी. And you did this when इतने चेंजेस नहीं थे. exactly. तो उस टाइम आपने वो स्टेप लिया. 150 लड़कियां, मतलब and that got all captured in FIFA documentary also, and that was the biggest obviously. So that's why I think even it compelled the prime minister of our country कि नहीं, मुझे इससे बात करना है. उन्होंने क्या बोला आपको? अफसान, आपने तो फुटबॉल में कमाल करके दिखाया है, और फुटबॉल के फैंस ज्यादातर कहते हैं बैंड इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एस इट लाइक ए अफसान. सेड कि उन्होंने मुझे एक हैशटैग दिया, टैगलाइन दी उन्होंने मुझे कि पीपल व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल पीपल से बेंड इट लाइक बेकहम, बट नाउ पीपल विल से एस इट लाइक अफशान. अरे वाह. Oh my God, that moment! I was so you got the Prime Minister of India. The most right now is the most famous world leader. Famous among all countries. All. Yeah, and you got him to coin a term for you. For me, and I had no idea he's going to say this to me. And when he said, I couldn't give the reaction कि मैं कितनी खुश हूँ, because obviously it was going live. मैं वो reaction भी नहीं दे पाई कि मैं कितनी खुश हूँ वो सुन के कि if you want to ace something, ace it like Afshan. And मैं वो जो tagline थी ना कि ace it like Afshan, मैं वो हमेशा कंटिन्यू करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, कि लोगों को जब वो मुझे देखे, मेरे काम को देखे, they will realize कि नहीं,
वो बंदी कुछ कर रही है एंड वी हैव टू सपोर्ट दैट। और जो बच्चे मुझे देखते हैं या मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। लाइक मी, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स है बैक इन कश्मीर, मैं चाहती हूँ वो बाहर आए, वो खेले। मैं बहुत ट्राई करती हूँ। इट्स नॉट लाइक मैं अपने टीम से बात करती हूँ, मैं अदर टीम से बात करती हूँ कि आई हैव अ प्लेयर इन कश्मीर, बट कश्मीर के जो प्लेयर्स हैं ना, वो कश्मीर में ही मतलब वो बन चुके हैं कि वो निकलना ही नहीं चाहते वहां से। मैं जब कश्मीर से मुंबई आई थी, देयर वाज अ रीजन कि मैं क्यों आई थी, बिकॉज when I was doing a lot of things, but the support from the association was not there. Nationals भी होते थे तो they used to give us excuses, no, the security reason is there, if anything happens to you, can't send you for the nationals. The लड़कियों का ये था, मैम we are doing so much of hard work but we don't know where we stand. फायदा क्या है हमारा इतना, मतलब पूरा साल हम ट्रेनिंग करते थे विदाउट एनी कंपटीशन। हॉबी थोड़ी है, ये प्रोफेशन है। एग्जैक्टली, वो चीज उनको फिर डिमोटिवेट करने लग गई थी कि नहीं, हमें अब छोड़ देना चाहिए फुटबॉल। एंड दैट टाइम आई टुक इट, ओके फाइन, आई शुड लीव, ताकि मैं वो एक पाथ बना सकूं उनके लिए कि नहीं, अगर आपको कश्मीर में चांस नहीं मिल रहा है खेलने का, then you can move out, you can go for the clubs, you can go for any good club or small club. मैं तो हमेशा, मेरा ये है कि always go for a small club because you will get a chance to play. Exactly. And if you go for a big clubs, you never know whether you will get a chance or no, if there is any other player who is better than you or no. I तो keep trying my best to be the best, because वो एक चीज होती है ना कि जब आपको चांस ही नहीं मिल रहा है खेलने का, then what's the fun of being a footballer? Bench, no doubt, I am also being on bench, तो मुझे पता है कैसा फील होता है। सपोर्ट तो टीम को पूरा कर पाते हैं हम, बट वो जो इनर अपना वो होती है ना सेटिस्फेक्शन, दैट वी आर नॉट ऑन ग्राउंड, वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग विद आवर टीम, कि हम अपनी टीम को जीत की तरफ लेके जाए, इफ वी आर लूजिंग बाहर से देख रहे हैं। एग्जैक्टली, सो दैट वाज द वर्स्ट फीलिंग फॉर मी कि मुझे नहीं रहना बेंच पे दोबारा, मुझे हमेशा फर्स्ट 11 में कैसे भी करके आई हैव टू मेक माई सेल्फ परफेक्ट, गुड, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई हैव टू डू इट, बट आई वॉन्ट टू बी ऑन द 11. एंड nowadays मतलब मैं कभी बोल दूं ना, सर चांस दो ना किसी और को, तो लाइक क्यों थक गई? नहीं सर, मैं चाहती हूँ क्योंकि बीइंग ए कीपर आई नो कि दूसरा कीपर क्या फील कर रहा है। इट्स सो हार्ड ना कि कीपर रिप्लेस, प्लेयर तो चलो 11 रहते हैं, मौका exactly, चेंज हो जाते हैं, बट कीपर कम होता है। तो मैं हमेशा कोच को बोलती हूँ कि लाइक अभी हम अहमदाबाद गुजरात गए थे खेलने के लिए IWL, एंड हम कोची की तरफ से खेल रहे, तो देयर वर 3 कीपर्स, आई वाज द फर्स्ट, देयर वाज सेकंड द केरला कीपर एंड थर्ड वाज अनदर कीपर, एंड मुझे वो फील हो रहा था कि शी इज गेटिंग डीमोटिवेटेड कि मुझे पवेलियन में बिठा रहे हैं, मुझे बेंच पे भी नहीं बिठा रहे। देन आई रेज माय वॉइस, सर आई वांट टू सिट इन द पवेलियन, इट्स अ इजी मैच। लाइक व्हाई वी वांट यू? लाइक क्योंकि मैं चाहती थी कि उसको, उसका जो मोरल है, उसका जो वो माइंडसेट है वो डाउन ना हो जाए कि मुझे चांस नहीं मिल रहा, बिकॉज हम प्लेयर्स का हमेशा ये रहता है कि हम बेस्ट है, हमें ये नहीं होता कि दूसरा प्लेयर क्या सोच रहा है हमारे बारे में, बट ये होता है कि हम बेस्ट है। बट वो रियलिटी चेक जैसे मुझे मेरे कोच ने दी थी, सबको चाहिए होती है वो रियलिटी चेक, तो मैं चाहती थी कि दूसरे कीपर्स को भी चांस मिले, तो आई स्टेप बैक। तो मुझे उसके लिए अपॉलजी लेटर भी लिखनी पड़ी कि सॉरी दैट आई denied to sit on the bench because of that girl, because मैं उसका मोरल डाउन नहीं करना चाहती। मुझे पता था इजी गेम है, अगर दूसरा कीपर भी खेलेगा तो वी कैन गेट इट, तो मैं वो एक चांस उसको देना चाहती थी कि गो अहेड, सी व्हाट डिफरेंसेस यू सी। और मैं उससे हमेशा बात करती हूँ, वो जब भी मतलब कीपर्स का ऐसा होता है ना कि दूसरे कीपर को देखकर ऐसा होता है कि ये मेरे पास नहीं आना चाहिए, होता है ऐसा, मैंने पर्सनल फील किया है ये। बट मेरा होता है कि मेरे जो इर्द गिर्द गोलकीपर्स होते हैं, दिल कम एंड सिट, दिल डिस्कस द होल गेम, दिल डिस्कस द होल सिनेरियो, उनकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट इट। एंड मैं उनको हमेशा एक चीज बोलती हूँ, देखो कोच की नजर में आना है तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। So one more thing that is that you said you are a Fit India ambassador as well, right? तो आपके उसमें क्या रोल्स है, आपको मतलब क्या करना होता है? मोस्टली हमको अपने वर्कआउट वीडियोस पोस्ट करने पड़ते हैं फिट इंडिया के लिए, और मेन थिंग है कि लोगों का ये है कि यूथ को फिट रहना जरूरी है। नो, एवरीबडी हैव टू बी फिट। आप आधा घंटा अपनी लाइफ को अपने बॉडी पे दोगे, वर्क करोगे अपनी बॉडी पे, तो आप ही बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से दूर रहोगे।
हमारा कोई फायदा नहीं होगा उसमें। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी हेल्प करना, उनसे बात करना, उनकी फिटनेस और उनके वर्कआउट के बारे में बोलना, वो क्या डाइट लेते हैं उनसे पूछना कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, इस एज में आपको क्या लेना चाहिए। तो दैट इज़ माई जॉब कि मैंने स्पेशली खुद को मैं करना, तो मैं बहुत कुछ चाहती थी फिट इंडिया में, बट द थिंग इज़ कि मुझे यूथ के साथ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग विद यूथ, तो मैं चाहती थी कि मैं सीनियर सिटीजन्स के साथ काम करूं, जो लोग अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते एक एज पे आके कि नाउ तो देयर इज नथिंग हमारे लिए, बट नहीं, यू हैव टू कीप योर बॉडी। अभी तो काफी यूथ भी नेग्लेक्ट कर रहा है जब फोन में दैट इज द यू नो आई गेट सो इरिटेट कि जब देखो मेरे फ्रेंड्स भी, मेरे घर पे भी जाती हूँ तो एवरीबडी इज ऑन फोन, तो मेरा फोन पड़ा रहता है। मेरी माँ बोलती है तो फिर इतना महंगा फोन रखने का क्या फायदा। मैं बोलती हूँ तो तभी यूज करूंगी ना जब जरूरत है, मैं ऑल टाइम फोन में नहीं रह सकती। सोशल मीडिया अभी कुछ हुआ नहीं होता है तो पोस्ट कर दो सोशल मीडिया पे। आई एम एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई शेयर एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ ऑन सोशल मीडिया, बट एक लिमिट में, एक ना मेन तो थिंग इज पबजी, लोग इतना क्रेजी है उसके लिए। आर यू? नो, ओह माय गॉड, आई गॉट इट। सो मुझे वो एक चीज ना मेंटली इफेक्ट करती है लोगों को कि तुम फिर उसमें घुसे जा रहे हो। गिव सम प्रोडक्टिव टाइम टू योरसेल्फ ना, कि उसमें आप एक जगह पे बैठ के क्या ही कर रहे हो, यू आर जस्ट लूजिंग योर आई साइट, यू आर जस्ट लूजिंग योर फिटनेस। तो वो एक चीज मुझे बोलनी थी कि प्लीज स्टॉप यूजिंग योर फोन्स, प्लीज बाहर जाओ, अपनी बॉडी पे काम करो, फिटनेस। अच्छा ठीक है, आधा घंटा अपनी बॉडी को दे दो, दैट्स इनफ कि आप फिट रह पाओ। एंड फोन से दूर हो प्लीज, अवॉइड स्क्रीन, मॉडरेट करो, मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली, मतलब ठीक है अगर आप फोन के साथ भी हो, काम कर रहे हो फोन पे, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल्स वर्क ऑन लैपटॉप्स एंड फोन्स, बट द थिंग इज वो काम के बाद आप उससे निकल आओ एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव, बाहर जाओ, सोशली एक्टिव रहो लोगों के साथ। आप फोन में यू कैन बी सो मच एक्टिव, मतलब आप किसी से फोन पे बात करो बट यू कैन नो दैट पर्सन कि इन पर्सन वो पर्सन कैसा है, दैट गुड और नो, गुड फॉर यू और नो। जब आप सोशली बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो आपका माइंडसेट भी चेंज होता है, जो आपके थॉट प्रोसेस है वो खुल जाते हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल, मैं अपने दोस्तों को भी बोलती हूँ प्लीज जब मेरे साथ हो प्लीज अवॉइड फोन। और मैं होती हूँ तो मैं तो सब रख देती हूँ फोन के, हाँ मैं शांति में बैठूंगी और फोन की जरूरत नहीं है। आई कांट कीप माई फोन ऑलवेज अराउंड विद मी, सो प्लीज गाइज check your phone. फोन कम करो भाई, that's how one message to the youth of the country, है ना? Please. तो एक चीज जो आपके बारे में पता लगी थी कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो कश्मीर में एक मेंस टीम ने आपको बुलाया कि why don't you come and goalkeep for us? What was that about? If you could tell us. That was obviously I told you that was the biggest thing कि कश्मीर में लड़के आप एक लड़की को गोलकीपिंग के लिए बुलाते हैं एंड वहाँ के जो लोग थे they were not accepting it कि एक लड़की लड़कों के साथ खेलेगी, वो भी लीग टूर्नामेंट में, they were not accepting it। बट वो जो लड़के थे वहाँ के, नो डाउट जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो माइंडसेट नहीं था लड़कों का, बट जब मैं कोविड के बाद घर वापस गई एंड मैंने लड़कियों को देखा लड़कों के साथ ट्रेन करते हुए, जॉगिंग वॉकिंग, लाइक जैसे मैं चाहती थी, या एग्जैक्टली मैं जैसे चाहती थी कि लड़कियां फ्रीली घूमे कश्मीर में, उनको किसी चीज का डर ना हो, एंड दैट वाज हैपनिंग इन कश्मीर। और क्या क्यों मुझे गूज़बम्स आते हैं व्हेन आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि ये चीजें मैं लाइफ में चाहती थी कि कश्मीर में हो, और जब वो हुआ है आई फेल्ट द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन कि नहीं चलो अच्छा है कि देयर इज सम चेंज कमिंग इन। और उस चक्कर में ना लोगों के माइंडसेट भी चेंज हो गए, जो परसेप्शन था लोगों का कश्मीर के लिए या कश्मीर के लोगों का जो परसेप्शन था आउटसाइडर्स के लिए वो चेंज हो गया। लोग मोर अब मतलब कि ना लोगों को जानना चाहते हैं, जो टूरिस्ट वहाँ आते हैं, बिकॉज माई डैड हैव अ टूरिज्म बिजनेस, तो मुझे पता है कि लोग बहुत डर के आते थे वहां पे। एंड व्हेन जो मेरे डैड के मतलब इसमें होते थे कंपनी में, दे ऑलवेज यूज्ड टू से योर डैड इज सो चिल्ड यार, कैसे डैड, मैं बोला फॉर यू
not for me. I don't know why it's not chill for me. And मेरे coach आए हैं कश्मीर, even though I'm requesting my coach to get a camp for girls in Kashmir so that हम वहाँ से लड़कियाँ pick कर सके, ला सके यहाँ पे खेलने के लिए. So actively working on getting more girls recruited from Kashmir and play a bigger platform. I'm the only girl who's representing Kashmir all over India, and I can't do that for a long time. So है talent, आपने देखा है? बहुत talent है, but यही है कि या तो फैमिली एलो नहीं करती बाहर जाने को, अब जाने को एलो भी करती है तो ये होता है कि जा कहाँ रहे हो, हम किस पे भरोसा करें, हमें तो ये ट्रस्ट नहीं है, नो वी कांट ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन. तो वो एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि वो लड़कियों की जो है दिमाग में, या तो बिकॉज आई पर्सनली नो कि अभी मेरी 2-3 प्लेयर्स को कांटेक्ट किया था कश्मीर में कि वो यहाँ पे आए. सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट टू शो योर वर्क, व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ, क्या काम कर रहे हो, कैसी इम्प्रूवमेंट है, आप पहले कैसे थे, अब आपकी इम्प्रूवमेंट कैसे हो चुकी है. मैं अपनी लड़कियों से बोलती हूँ अच्छा मैं आप उनको तो बोल दूंगी आपका सोशल मीडिया चेक करने में, आपके सोशल मीडिया में वैसा कुछ है वो देख पाए. क्योंकि वहां का सोशल मीडिया ये है कि हाँ ठीक है कुछ भी डाल दिया, कुछ भी कर लिया. ये नहीं कि अपना जो प्रोफाइल है वो हम ऐसा बनाए कि अगर कोई हमें रिकमेंड करता है तो वो डायरेक्ट हमारा प्रोफाइल देखे और देखे कि नहीं इस बंदे में वो कैपेबिलिटी है कि वो आगे यहाँ पे आके ट्रेन कर सकता है, प्रोफेशनल. एग्जैक्टली. तो वो चीज वहाँ पे बच्चों में नहीं है और मैं चाहती हूँ वो चीज चेंज हो, क्योंकि आजकल सारा जो पूरा घूमता है ना वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे. एग्जैक्टली. तो वो एक चीज वहाँ की लड़कियों को, वहाँ के बच्चों को बताना, यूथ को बताना जरूरी है कि जस्ट कीप योर सोशल मीडिया अप टू डेट. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कुछ भी डालो, बट जो आप काम करते हो, इट्स नॉट अबाउट फुटबॉल, जो भी आप काम करते हो वो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करो ताकि लोग देखें कि आप क्या काम कर रहे हो. देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कश्मीर, बट दे आर नॉट शोइंग इट. बट जब आप तक दिखाओगे नहीं कि आप क्या काम कर रहे हो कश्मीर में, तो वो लोगों तक आएगा कैसे. एंड अब आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे दैट वो जमाना गुजर चुका है कि आप ऐसा करो. आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के पास बहुत पावर है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए. तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें वो यूज़ करे. सोशल मीडिया फ़ोन है तो उसको एक अच्छे वे में यूज़ करे, उसको अच्छे अपने लिए यूज़ करे ताकि वो कुछ फ़ायदा हो उनका उन चीज़ों से. लाइक कश्मीर में पहली बार न्यूट्रिशन पार्टनर किसी को मिला है, वो भी गर्ल्स टीम को, and that is optimum. Thank you optimum nutrition because स्मूथ. क्योंकि लड़कों को हर एक चीज मिल जाती है कश्मीर में. इफ दे से ट्रेनिंग, इफ दे से न्यूट्रिशन, इफ दे से एनीथिंग रिगार्डिंग स्पोर्ट्स मिल जाता है लड़कों को, बट लड़कियों को उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती. मुझे लगता है देयर आर नाउ तो देयर आर अकेडमीज, देयर आर क्लब्स फॉर गर्ल्स. थैंक्स टू एएफएफ जो उन्होंने बोला लड़के तभी खेल सकते हैं जब लड़कियों की टीम हो उनके साथ, बिकॉज देयर इज अ रूल इन एएफएफ जो रिसेंटली निकला है कि इफ यू हैव अ बॉयज टीम यू हैव टू कीप योर गर्ल्स टीम आल्सो. तो वो एक चीज की बॉयज के जो क्लब्स है उनमें अब आ गया कि नहीं हमें तो अपनी गर्ल्स की टीम भी बनाती है जो अच्छा हो गया गर्ल्स के लिए, so that they'll get a chance to play for good clubs. Definitely. तो वो एक चीज थी कि जब मुझे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन से कॉल है कि we want to sponsor any club in Kashmir. So I was like, no male club, huh? Only female club I can give you. So I was like, okay, fine, cool. We want to sponsor females so that कि लोगों को पता चले कि वहाँ की females को भी nutrition partners की जरूरत है. And that's very commendable to be honest. You know, I talked to them about my this club कि इसको nutrition दे दो, but they didn't. अच्छा. They wanted to do for people who need it, who can't afford it, who can जो जिनको इसकी जरूरत है एक्चुअल में. एंड जब उन्होंने मुझसे ये बोला कि we want a team from Kashmir, we can sponsor. I was like, okay, I have a team, I'll give you, come ahead. And वो जब लड़कियों ने वो चीजें लेना स्टार्ट की उनको पता ही नहीं था कि वे क्या होता है, एग्जैक्टली उनको कुछ आइडिया नहीं था उस चीज का. बट जब मैंने वो लाया वहां पे एंड दे स्टार्ट वर्किंग एंड यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, तो उनको पता चला कि नहीं इससे भी हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है और हम रिकवर कर पाते हैं अपनी बहुत सारी चीजों से. या अपनी बॉडी में हमें अगर वीकनेस लग रही है हम वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय यूजिंग ऑल दीज प्रोडक्ट.
तो वो एक चीज मैं बोला मैं आज सबका थैंक यू करूंगी ताकि जितने भी लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है वुमेन्स को, जितने स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया है, दे वोंट फील बैड कि मैंने कभी, Definitely. क्योंकि हमेशा मैं अब आई कांट रिमेम्बर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस स्मॉल ब्रेन. तो इस चीज वो पता है इतने देर से मतलब मैंने वो इधर क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो क्या हो रहा है ना, मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले आप जवाब दे रहे हो उसका एंड एकदम ऑर्डर से. हाँ, सो इट्स लाइक यू स्क्रिप्टेड इट इन योर माइंड इटसेल्फ. तो आपके मतलब माइंड है, क्रिएटिविटी है, लाइक आई थिंक यू मेड फॉर द कैमरा आल्सो. सो काफी शूट वूट पे भी जाते होगे, तो कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि पीपल आर लाइक यू नो हाउ आर यू सो गुड, यू आर फकिंग फुटबॉलर, लाइक इतना अच्छा कैसे? आई टेल यू, एक शूट था अभी मेरा हमदर्द के लिए, साफी का, एंड दे वर लाइक कि अफशान दिस इज द स्पॉट, यू हैव टू डू दिस. आई वाज लाइक ओके, कितना टेक, like how many takes, if it's one take is good, okay. I like okay, come on, let's do it. और मेरा शूट क्या, जितने भी वहाँ पे लोग होते थे शूट के लिए, उनको इतना टाइम लग जाता था एंड फिर मुझे आके बोलते थे यू आर फोटोजेनिक और कैमराजेनिक, आई डोंट नो बट यू आर सो गुड. So till now whatever conversation we've had, I've really enjoyed it, and मेरे को you know थोड़ी बहुत vibe पढ़नी आ गई है जब से podcast करने लगा हूँ. And even before podcast when I used to travel, I really used to enjoy interacting with people. And पता है थोड़ा बहुत बात करके सोचता था मैं कि लाइफ में क्या क्या हुआ होगा, है ना, मतलब क्या क्या मैं आपने इतना कुछ बताया तो मेरे को I feel 3 words have come to my mind to really describe you. You can correct me if I'm wrong. The first word is a rebel. Definitely. You can check it everywhere. No. There are few titles with rebels. Afshan Ashiq, the rebel from Kashmir. No, but for me, this rebel is in a positive way. No, that positive way that she stood for their dreams and all, yeah. And you fought for your dreams the way you fought with society, with your family also, until you know सबको मनवा लिया कि छोड़ना ही नहीं किसी को, सबको support में लेके चले. Right, especially in a country like India, which is you know it's very hard to do that, and even men have a problem getting their family, and you being a girl from Kashmir, you know. So hats off to you for that. The second one is a word which I feel is which describes you as captain. Captain. Yeah. Yeah, right. So captain, someone you don't have to be a captain of the team for that, right. But someone you know जो बिना captaincy post के भी captain जैसा behave करता है कि मेरा player क्या कर रहा है, उसके लिए best क्या है. Right. You know, you told me that once you gave up your spot for someone, you know, someone else, so that they don't feel low. So that's not everyone's cup of tea, because everyone से अगर मैंने दे दिया, maybe I won't get it back. Right. बहुत वो रहता है. वो कहता है ना कि एक chance मिल गया और उसने prove कर दिया, then I'll sit out and she will be the playing one. And the third word which I feel describes you is a leader. Leader, definitely right? I am. Because when you told us that you gathered 150 girls in Kashmir and you, the leader of our country also, you know, thought कि नहीं इस बंदी से बात करना चाहिए, फुटबॉल है लेकिन इस बंदी से बात करना है मेरे को. That's the biggest thing. Yeah, so I think these 3 words. I take it because I am like you described it. वो चीजें मैंने लाइफ से ही सीखी है, and I was a very shy girl before coming into sports. I never used to talk to any person कि मुझे डर लगता था कि अगर मैं कुछ बोल दूँगी कुछ गलत ना हो जाए मेरे मुंह से ना निकले. But then after when I came into sports, वो boldness आ जाती है sports में आपके पास कि you can talk anything, express yourself, मतलब किसी भी way में आप express कर सकते हो अपने आप को. And I'm very glad कि मैंने sports as a career choose किया. And I'm pursuing it. I'll pursue it. And मैं बाकी सब लोगों को भी बोलती हूँ कि go into sports. You'll get a lot of things in sports. Main thing is you will get yourself fit and mentally and physically. That is the biggest thing for your like future कि आप mentally और physically fit हो, and you can overcome with anything like in your life. अगर आपको एक मैसेज बोलना है, imagine कि ये वीडियो हमने YouTube पे डाला है and 10 साल पहले की अफशान उस वीडियो को देख रही है. What would be the one message that you would give her? Never give up on your dreams. When you start chasing your dreams ना, don't think about कि मुझे उससे outcome क्या मिलेगा. Just chase your dream. One fine day that dream will chase you back. That's my advice, because मेरे साथ ऐसा हुआ है
कि when I started football, I had no clue what to do, where to go, because मुझे वो ना फुटबॉल के बारे में कुछ पता नहीं था. Then I started, मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था, to be very honest. But मैंने फुटबॉल की इतनी पढ़ाई की है, मेरी मम्मा बोलती थी इतनी पढ़ाई तो उसमें कर लेती, कुछ बन लेती वो. बोलती थी नहीं, स्पोर्ट्स में जब when you have interest about anything ना, तो वो आपको पढ़ने में भी या समझने में भी बहुत आसान होता है. It's not about football, आपको खेलना ही होता है, you have to learn a lot, और उसके लिए आपको बहुत पढ़ना भी पड़ता है. And मेरा मैसेज फॉर पर्टिकुलरली गर्ल्स है कि never give up on your dreams. If you are dreaming something, if you will chase that dream, definitely you will achieve that and you will become really big. And वो एक चीज़ याद रखना कि हम मतलब जो लाइक हमारे समाज में यही है, जैसे मेरी फैमिली भी चाहती है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लेकर सेटल हो जाऊँ, which I don't want. सरकारी नौकरी which I never want. मैं पहला फोन आता है तो जॉब का क्या अरे यार फोन मत किया करो मुझे, तुम लोग भी इरिटेट कर देते हो जॉब बोल के. एंड लोगों को लगता है कि पैसे के पीछे भागे तो पैसा हमारे पीछे भागेगा. नहीं, तुम अपने पैशन के पीछे भागो, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आता है. एंड जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ मेंटली फिट, एंड थोड़ा बहुत टाइम अपनी बॉडी को, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू रन, जस्ट sit at home and do yoga. Yoga is also good for your health. And that's it. And rest. You can join me anytime, any suggestions you want in your life. I'm always there. मैं ऐसा नहीं दिखती कि कौन क्या है. मैं पूरा Instagram अपना चेक करती हूँ. अब फालतू मैसेज का रिप्लाई तो नहीं मिल सकता, बट जो मैं देखती हूँ कि हाँ प्रोडक्टिव मैसेज है, कि इनको शायद मेरी एडवाइस की ज़रूरत हो, या ये चाहते हैं कि मैं इनसे बात करूँ, या इनकी लाइफ में मेरे से बात करने से कुछ चेंज आ सकती है. सो आई डू दैट. तो मेरा मैसेज ये है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको ऐसा लगता है कि हम एक बार बात करें तो यू विल गेट अ क्लैरिटी और यू विल गेट अ चांस टू clear your mind. So please guys, don't be shy, just talk to me. I'll definitely get back to you. और मैं आपको फुल सपोर्ट दूंगी. एंड मेन चीज़ होती है बात करना, आपके दोस्त के साथ, अपनी फैमिली के साथ. जस्ट टॉक वट एवर यू आर फीलिंग इनसाइड, टॉक इट आउट, बिकॉज वो बाहर आता है ना, तो तब आपको क्लियरिटी मिलती है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है. सो बिल्कुल. एंड आई फील दैट समथिंग दैट अ लॉट ऑफ द टॉप एथलीट्स इन आवर कंट्री कैन लर्न फ्रॉम एज वेल, कि आप अपने डीएम्स चेक कर लो, 2-4 के रिप्लाई कर लो. मतलब उसमें होते फालतू मैसेजेस भी होते हैं, बट उसमें कोई जेन्युइन भी होते हैं जिसको आप अगर हेल्प को आप उसकी लाइफ चेंज कर सकते हैं. सो इफ यू कैन हैव दैट इम्पैक्ट ऑन समवन, व्हाई नॉट. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है करना. एंड इन्होंने बात किया कि सिर्फ खेलना ही नहीं होता, पढ़ाई लिखाई भी होती है. बहुत सारी नौकरियां भी होती है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में. बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. लोगों को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स बस खेलना होता है, बट देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स फॉर यू गाइज. प्लीज ये मत सोचो कि स्पोर्ट्स इज जस्ट अ स्पोर्ट. It can give you a lot of things. And we've done a video on that as well on our channel. There's a video specifically about jobs in sports, and also jobs for women in sports. Sports, right? So, like, if you want more information on that, you can definitely check that out. Yeah, I'll also check. I don't think you need to watch it. No. In life, people can need anything anytime, right? बिल्कुल. And I think this has been an amazing episode, and ये बहुत ही ज़्यादा fun, chill and informative and the most thing inspirational podcast है. अभी तक हमने काफ़ी सारे लोगों के साथ बात की है, and I'm telling you, after this podcast, you've left me very inspired. That thank you. You faced so much adversity, so much hardship and challenges, and you followed your dreams and you reached a position that you want to be. And still, there's a long way to go. Long way to go. And I feel that you've only just begun. Right. Yeah. I have to go very far. So, Kashmir ki Shan Afshan. Afshan, yeah. I like that. I'll copy it. So, which one is better, Kashmir ki Shan Afshan or Ace It Like Afshan? Ace It Like Afshan. मोदी जी, चलो आपको दिया. Your top. OG. Chalo, so on that note, we'll sign off. Like this video, share this video with your friends and family, and subscribe to the channel. ये लोग देखते हैं वीडियो, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते. Why? You know what? जो नहीं, मतलब वो व्यूज आते हैं ना, लाइक्स नहीं आते, तो व्यूज नहीं खुश रहने का, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि लोग देख रहे हैं बट जल भी रहे हैं. समझ लो. ऐसा है. ठीक है. So she's given me some life mantra as well. And yeah, I will be posting her Instagram in the description as well, so you can definitely get in touch with her.
एंड लाइक शी सेड फालतू मैसेज मत करना भाई, काम का मैसेज करना, या अप्रिशिएट करना है तो वो सब करना, परेशान मत करना, देखो ठीक है, टाइम कम है अपने पास. एग्जैक्टली, और सोशल मीडिया पे तो बहुत ही कम. So on that note, we'll sign off and see you on the next episode of Sports Backstage. Cheers.